परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। दक्षिण भारत के बौद्ध अनुयायियों के लिए 5 मार्च का दिन बेहद खास था। हर वो शख्स जो भगवान बुद्ध को अपना आराध्य मानते हैं, बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, उनके लिए ये दिन भूलना नामुमकिन है, क्योंकि ये वो दिन है जब परम पावन 17वें गेलवांग करमापा के पांव पड़े केरल में। मुंडगोड़ जाते समय रास्ते में खड़े इन हजारों बौद्ध अनुयायियों की एक ही इच्छा है कि कैसे भी परम पावन 17वें गेलवांग करमापा की उन्हें एक झलक मिल जाए। ये नजारा है मुंडगोड़ मॉनेस्ट्री का। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी ये मॉनेस्ट्री बरबस ही किसी का भी मन मोह लेती है। परम पावन 17वें गेलवांग करमापा को यहीं आना है एक स्पेशल सेरेमनी में। परम पावन 17वें गेलवांग करमापा की अगवानी में राज्य के नेताओं के साथ साथ प्रशासनिक अमला भी जुटा हुआ है। परम पावन 17वें गेलवांग करमापा का तिब्बतियन यूथ कांग्रेस के नेताओं ने भव्य स्वागत किया। रिफ्यूजी यूनियन के लोग, बच्चे और मॉनेस्ट्री का स्टाफ भी उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा था। लोगों का प्यार और स्वागत देखकर परम पावन गेलवांग करमापा भी गदगद हो उठे। और आखिर लोगों की इतनी आस्था और झलक पाने की बेताबी भी क्यों ना हो, आखिर एक लंबे अरसे बाद उनके बीच आराध्य और परम पावन खुद ही जो मौजूद थे। यहाँ से परम पावन गेलवांग करमापा का काफिला रुख करता है शाक्या मॉनेस्ट्री की ओर। परम पावन 17वें गेलवांग करमापा की यहाँ आने का मकसद है रिफ्यूजी कैंप का जायजा लेना। रिफ्यूजी कैंप का दौरा करने के बाद जब परम पावन 17वें गेलवांग करमापा वापस पहुंचे तो आशीर्वाद लेने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई थी। परम पावन ने भी किसी को निराश नहीं किया। हजारों की तादाद में मौजूद लोगों ने परम पावन के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। मौजूद लोगों में सिर्फ बौद्ध धर्म अनुयायी नहीं बल्कि दक्षिण भारत के कई कोनों से आए हुए लोग भी शामिल थे। परम पावन 17वें गेलवांग करमापा ने लोगों को ज्ञान भी दिया। परम पावन 17वें गेलवांग करमापा की दक्षिण भारत की यात्रा में कल हम आपको दिखाएंगे उनके दूसरे दिन की यात्रा। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Tashtale and Namaste. 30th August 2010, Monday, 21st day of the 7th lunar month. Water wind is the elemental combination, and this is an inauspicious combination,
and brings disharmony and separates your friends and relatives. Therefore, don't believe in rumors and gossips, and try to get along well with your friends and relatives to avoid any bad relationship with them. This is also not an auspicious day to invite guests at your house. So avoid inviting guests at your house. Then there is also Sadak Biti running on this day, early morning 3:48 a.m. to the next day. Therefore, avoid undergoing accessory therapies of moxibustion and bloodletting, that is tarsik. However, you can perform naga offerings and rituals to bring rain, etc., because there is Lutep on this day. 31st August 2010, Tuesday, and 22nd day of the 7th lunar month. It's fire and fire elemental combination, and this is an auspicious combination, and it brings growth or increase, resulting in the increase of sustenance and riches. So basically this is an auspicious day. Therefore, it's a good day to practice generosity, making offerings to the deities, and also performing naga offerings, as there is Lutep on this day. However, you should avoid undergoing tarsik, that's accessory therapy of bloodletting and moxibustion, till the late afternoon. There is also Sadak Ulak running on this day. Therefore, you should avoid marriages, funerals, planting seeds, engaging in important business assignments, and initiating a construction work. See you tomorrow at the same time. शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संगम। ये कार्यक्रम आपको रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। Best religion is some religion is personal choice. Personal choice. For some people, maybe Christian is best. For some people, Buddhist best. It's dependent on mentality and the mental inclination. Everybody has a different mental state, you see. For instance, if you go to the schools, you see, some schools, a teacher is very tough. If you don't study, he hit you, punished you. That may be good. And some people, very lenient teacher, smiling teachers. And with this kind of teachers, you can study better. So that is what His Holiness always says. You see. I think for us, the Buddhist people, now many Buddhist, Buddhist cultures become so. I think in the religion, the sense, as I said, the truth is truth. There must be truth. So this truth is open to everybody. It's open to West, it's open to East, it's open to Middle East. It's open. It's international Jew. Says so.
in brief to your questions, in my view, at least you say, if you excuse me, spiritual is the philosophical systems which described that truth with support of the philosophy. Believe in that truth, supported by philosophy. And religion is just worshipment out of the faith. And you study in Buddhism, you see, study in Buddhism, you have the Buddhisms, you study in Buddhism, Buddhist philosophy always presented three forms: base, path, result. Base, path, result. Base describe the nature of the phenomena. Path is the base. Path is to achieve the highest your goal, freedom from suffering, the highest happiness, everlasting happiness. Path lead to the highest happiness, which based on understanding of the nature of the phenomena. The result is the final achievement from applying such path into meditation practice. So they present it in three ways: base, path, result. To understand the last two, path and result, it is necessary to understand the base nature of the phenomena. Here, Buddhism explains each and every phenomena has two nature: ultimate nature and conventional nature. Conventional nature deals with law of cause and effect, cause and effect, and activities with which we everyday live. Ultimate nature is the shunya, emptiness. By understanding these two nature of the phenomena, understanding this phenomenon, Buddhist path to liberate oneself from suffering and achieve the highest happiness based on this understanding of truth. Therefore, I think it requires to study Buddhist logic, the reasonings, to understand, to bring the understanding of this true nature into our mind, in thought. Our monastic system, first they introduce the basic logics and then basic psychologies. As I said, the spiritual path deals with more internal world, and therefore it's important to know mental state, what kind of the mind is there, how it functions, where it comes from, what brings results from this, to understand it. I think it's Buddhist psychology. The Luri introduced these two ways, and after that study the path and the result
you know. This is the brief answer. Then goes, if I could not finish it, all of your answers, I would apologize, you know. Time is going to run out. And the stomach is ringing. Kishala, lunch is ready. Yes. And then there is one question, Big Bang. This early morning, I did mention a little bit. I compared, you know, this in terms of the four kind of the cause and effect. You know, I mentioned there's four different thoughts. One thought is one single result is only arise from single result, single cause. Single cause, single cause. Second one is the single cause, many results, produce many results. Third one is the many cause produce only one single result. Fourth one is many cause cooperatively produce many results.